Next are the theories of the ascent of sap. ठीक है, so we have done with the process of ascent of sap, which are to be determined by means of the various kind of experiments. So next are the theories which helps in proving that the different forces or the different tissues basically help in the transportation of water. So we have given two main theories. One is the vital force theory and another one is the physical force theories. ठीक है, वाइटल फोर्स थ्योरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਕਾਊਂਟ ਫॉर द ਅਪਵਰਡ मूवमेंट ऑफ द वाटर बाय मीन्स ऑफ द एक्टिविटी ऑफ लिविंग सेल्स ऑफ द प्लांट बॉर्डरिंग जाइलम. सो लिविंग सेल्स ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਦੇ ਆਰ ਮੇਨਲੀ ਹੈਲਪ ਇਨ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर. ठीक है, in case of vital force theory, whereas in case of physical force theory, physical forces ਦੇ ਵਿੱਚ obvious है कि different forces like we can say is that capillary action हो गया, imbibition action हो गया, ठीक है, root pressure हो गया. So that means different forces help in the transportation of water, that is to be considered in the physical force theory, whereas in case of living cells which help in the transportation of water, that is mainly considered in case of the vital force theories. So different theories ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ regarding the ascent of sap. So first we will talk about the vital force theory. So first ਜਿਹੜੀ theory ਹੈ that is of the Westermeyer. Westermeyer ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਪਵਰਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ that basically carried out by the activity of the living cells. We can say is that living cells, that is of the parenchyma cells, ठीक है, as well as through the xylem parenchyma cells. ठीक है, xylem parenchyma cells तो basically ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ कि transportation अकर ਹੁੰਦੀ है xylem parenchyma भी plus tracheids भी as well as vessels. They are basically acting as the water reservoirs. कि मेन ਜਿਹੜੀ मूवमेंट है that basically carried out by the xylem parenchyma cells. ठीक है, ਜਿਹੜੇ tracheids and vessels, they are basically acting as a main water reservoirs through by means of the which are basically held by means of the capillarity. ठीक है, so ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਾਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੈ that has to be according to the Westermeyer. ठीक है, then next is the Gödel-Whisky. Gödel-Whisky ने की किया है कि they have given the staircase pathway ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਅੰਡਰ ਦ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆਫ ਟੂ ਮੇਜਰ ਫੋਰਸਿਸ, one is the atmospheric pressure and another one is the periodic changes in the osmotic pressure of the parenchyma cells of medullary rays. ठीक है, so medullary rays ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ osmotic pressure ਜਾਂ osmotic changes ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ in case of the parenchyma cells of the medullary rays, so ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਰ ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਆਪ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੱਧਦੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ. ਸੋ ਦੈਟ ਵਿਲ ਅਲਾਉ ਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਵਾਟਰ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਵੇ ਆਫ the staircase manner in the sense like here we can say is that at the lower portion, at the lower region of the xylem vessels, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ parenchyma cells ਨੇ they will absorb the water from the xylem vessels by means of the osmosis. So ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੈ water ਜਿਹੜਾ ਵਾ that has to be absorbed towards the upward side from the high osmotic pressure towards the low osmotic pressure ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਾਟਰ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ obvious ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਵਾਟਰ ਨੇ ਮੂਵ ਕੀਤਾ then ਸੇਮ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਵਾ that is also carried out by means of the high osmotic pressure towards the lower osmotic pressure. So water ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ from the lower side it is moving towards the upward side. ਠੀਕ ਹੈ, next is the pulsation theory of the Bose. सो बॉस द्वारा एक पल्सेशन थ्योरी दी गई. उन्हें की किया कि दे हैव इंसर्टेड अ फाइन इलैक्ट्रिक प्रॉब, दिस इलैक्ट्रिक प्रॉब इन द स्टेम ऑफ डेस्मोडियम प्लांट दे विच कह लो कि प्रॉब जड़ियाँ इंसर्ट की गई एंड दैट प्रॉब इज़ बेसिकली कनैक्टेड विद दैट ऑफ द गलवेनोमीटर एंड एन इलैक्ट्रिक सर्किट. सो गलवेनोमीटर दे नाल कह लो कि कनैक्ट होए और प्लस एक इलैक्ट्रिक सर्किट दे नाल कनैक्ट होना होया. सो गलवेनोमीटर जिहड़ा कह लो कि ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਨੇ ਰੀਡਿੰਗਸ ऑब्जर्व कीतियाँ ऑसिलेशंस दियाँ कि it shows that there is a particular oscillation that is carried out in the outer part of the stem, but as the probe reaches towards the innermost cortical cells ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ oscillations ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ as comparatively that of the outer side.
कि जिहड़ी प्रोब दे थ्रू कि आउटर साइड वाल नूं जिद्दां ही प्रोब इंसर्ट हुई उत्थे पल्सेशन जिहड़ी है थोड़ी बहुत नज़र आई या कह लो कि ऑब्जर्व की, ठीक है। बट जिद्दां जिद्दां ही होर फर्दर इंटरनली मूव करते गए सो पल्सेशन जिहड़ी सीगी होर ज़्यादा या कह लो कि ऑसिलेशन जिहड़ी सी होर ज़्यादा उस दे विच ऑब्जर्व की गई। सो अप टू द कॉर्टिकल सैल्स, तो कॉर्टिकल सैल्स तक जिहड़ी पल्सेशन सी बहुत ज़्यादा उन्होंने ऑब्जर्व की। सो अकॉर्डिंग टू बॉस उन्होंने कहा कि जिहड़े कॉर्टिकल सैल्स ने दे प्लेस अ मेजर रोल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर as a main oscillation of the pulsations are basically occurred in the we can say is that in the cortical region, ठीक है। So that is the main theory that is basically carried out by the Bose. Next is the Jensen theory. जेंसे थ्योरी ने की कहा कि वाटर जिहड़ा वा दैट इज़ एब्जॉर्ब बाय द मेडुलरी रेज सैल्स फ्रॉम द जाइलम वैसल्स, ठीक है। कि मेडुलरी रेज द्वारा जाइलम वैसल्स तो जिहड़ा पानी है और ऑब्जर्व किया जाएगा, ठीक है। एब्जॉर्ब करन तो बाद दैट ट्रांसपोर्ट इनसाइड द लिविंग सेल्स इज बेसिकली कैरिड बाय द प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, सॉरी प्रोटोप्लाज्मिक द स्पेलिंग गलत ने। सो प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग द थ्रू कह लो कि वाटर जिहड़ा इट हैज़ टू बी कैरिड आउट फ्रॉम द वन xylem vessel towards the another xylem vessel, ठीक है। So these are the main we can say is that the vital theories which was given by the Westermeyer, Gödelewski, Jensen, Bose. So they shows that the living cells, or we can say is that the xylem vessels, or we can say is that tracheids, medullary rays, parenchyma cells, these are the major cells which are helping in the transportation of the water, ठीक है। सो बट ये रिगार्डिंग भी किन्नी सारी ऑब्जेक्शंस जिहड़ियां सी वो पाईयां गईयां, लाइक कि बॉशरी ने कह लो कि एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उन्हें की किया कि एक पॉइजनस फ्लूइड जिहड़ा सीगा वो सप्लाई किया टूवर्ड्स द कट एंड ऑफ द बेस ऑफ द ट्री, ठीक है। सो पॉइजनस फ्लूइड जिद्दां ही कह लो कि सप्लाई ऑन किया, ऑब्वियस है पॉइजनस फ्लूइड जिहड़ा वा दैट विल टोटली अफेक्टिंग द मेन लिविंग सैल्स उत्ते डायरैक्टली इंपैक्ट करेगा, क्योंकि ऑब्वियस है लिविंग सैल्स जल्दी कंटैक्ट दे विच आउणगे तो ऑब्वियस है कि वो जिहड़े सैल्स ने दे बिकम डेड वन, ठीक है। क्योंकि कि कह लो कि जिहड़ा अपने कोल पॉइजनस फ्लूइड जिहड़ा टोटली अफेक्ट करेगा लिविंग सैल्स नूं। सो जिस दे करके उन्हां दे जिहड़े कह लो कि टाइम ड्यूरेशन है उन्हां दी जिहड़ी लॉन्गिविटी है वो घट जाएगी। सो दैट मीनस दे बिकम डेड। सो डेड होने करके की है अपने कोल होना की चाहिए कि जिहड़ा फ्लूइड है वो फ्लूइड मूव नहीं करना चाहिए फ्रॉम द लोअर साइड टूवर्ड्स दी अपवर्ड साइड, ठीक है। जिवें आपां गल की कि जाइलम पेरेन्काइमा सैल्स ने मेडुलरी रेज ने या आपां किन्ने सारे होर टिश्यूज़ की गल की, ट्रकीड्स हो गया या we can say is that the parenchyma cells, ठीक है, which are mainly acting as the living cells which are helping the carrying out the water transportation, ठीक है। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪॉइजनस फ्लूइड उस उत्ते डायरैक्टली इंपैक्ट करेगा तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ फ्लूइड ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਾਂ कह लो कि कंटेंट है पॉइजनस फ्लूइड का कंटेंट है वो मूव नहीं करना चाहिए फ्रॉम लोअर टूवर्ड्स द अपवर्ड साइड। बट बॉशरी ने जिद्दां ही पॉइजनस फ्लूइड सप्लाई किया तो पॉइजनस फ्लूइड जिहड़ा सी बेसल रीजन तो इट इज़ शिफ्ट टूवर्ड्स द अपवर्ड साइड ऑल्सो, ठीक है। कि अपवर्ड साइड वाल नूं भी कह लो कि टॉपमोस्ट साइड वाल नूं भी जिहड़ा पॉइजनस फ्लूइड सीगा वो भी पाया गया, ठीक है ना, एज कंपैरेटिवली विद दैट ऑफ द डेडिंग ऑफ द लिविंग सेल्स, ठीक है। सो सेम एक्सपेरिमेंट स्ट्रॉसबर्गर ने भी यही एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उन्हें की किया विद दैट ऑफ द पिक्रिक एसिड विच इज़ बेसिकली पॉइजनस टू द लिविंग सेल्स, ठीक है। सो उन्हें पिक्रिक एसिड के थ्रू किया। सो पिक्रिक एसिड के नाल भी उन्हें ट्रीट करवाने तो बाद सेम जिहड़े ट्रीज सीगे ट्रीज के अपवर्ड पोर्शन तक भी पॉइजनस फ्लूइड जिहड़ा वो पहुँचिया होया सीगा। सो दैट मीनस ये तो ये पता लग गया कि लिविंग सैल्स के खत्म होने के बावजूद भी स्टिल जिहड़ा वा वो फ्लूइड मूव कर रहा है फ्रॉम द लोअर साइड टूवर्ड्स द अपर साइड। दैट मीनस दे आर सम अनदर टिश्यूज़ विच आर हेल्पिंग इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द water from the lower portion towards the upward side, ठीक है। so they are the major objections regarding the vital force theories. So according to that, so they have given the different physical force theories like root pressure theory, capillarity, imbibition, atmospheric pressure, as well as the cohesion tension theory, which is the widely accepted theory, cohesion tension theory. So first one is the root pressure theory. Obviously root pressure theory that was given by the Priestley
ਪ੍ਰਾਈਸਟਲੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ obvious ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰੂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਜਨਰੇਟਡ ਇਨ ਦ ਰੂਟ ਰੀਜਨ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਰੂਟ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜ਼ਾਇਲਮ ਟਿਸ਼ੂ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਦੈਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਟੂ ਬੀ ਐਜ਼ ਅ ਰੂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦਿਸ force is basically developed in the xylem of the root so which will help in pushing the sap upwards towards the topmost of the plant and they are mainly carries out up to the 1 to 2 atmospheric pressure so 1 to 2 ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੁਝ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 5.6 ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਦ ਗ੍ਰੇਪ ਵਾਈਨਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਕੁਛ ਲਾਰਜਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਟਾਲੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ but still they are having a main objections regarding the root pressure theory what are the main objections ਕਿ ਜਿਹੜੀ root pressure ਹੈ root pressure ਹਰ ਇੱਕ plant ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ obvious ਹੈ ਕਿ root pressure ਹਰ ਇੱਕ plant ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਮਨੋਸਪਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ root pressure so but still they are the most tallest one ਠੀਕ ਹੈ tallest one ਔਰ plus ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ water ਦੀ ਜਿਹੜੀ movement ਹੈ that has to be carried out instead that of the root pressure ਠੀਕ ਹੈ so ਇੱਕ objection ਹੋ ਗਈ ਦੂਸਰੀ objection ਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ water ਜਿਹੜਾ ਵਾ it is continuously rise upwards in the absence of roots also ਕਿ roots ਅਗਰ ਕੱਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਦ ਵੀ ਉਸ ਦੀ absence ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ water ਦੀ ਜਿਹੜੀ upward movement ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ carried out ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ then we can say is that the ਜਿਹੜੇ rapidly transpiring plants they do not show any the root pressure but still they are in a tension and it is found to be most we can say is that transporting water content from the lower towards the upward side okay so they are the major objections regarding the root pressure theory next is the capillarity theory so capillarity theory ਦੇ ਵਿੱਚ obvious ਹੈ they have shown a different criteria for the transportation of water where the water has to be rises in the narrow tubes due to the force of surface tension so narrow tubes ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ water ਦੀ ਜਿਹੜੀ movement ਹੈ it has to be carried out by means of the surface tension that phenomena is basically called to be as a capillarity ਠੀਕ ਹੈ so ਜਿਹੜੇ xylem vessels they are basically narrow at one time ਠੀਕ ਹੈ so but ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪਿਲਰਿਟੀ obvious ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਿਲਰਿਟੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਰਮਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦੇ ਆਰ ਟੋਟਲੀ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਵਨ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰਜਰ ਹਾਈਟ ਵਾਲੇ ਨੇਗੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲਾਰਜਰ ਹਾਈਟ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਿਲਰਿਟੀ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਮੇਜਰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਿਸ ਕੈਪਿਲਰਿਟੀ ਥਿਊਰੀ ठीक है so capillarity cannot operate in the plants having tracheids in the xylem due to the presence of the end walls so obvious है कि जिस ਵਿੱਚ tracheids ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਾਂ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ so that means it is totally negligible one next is the imbibition theory imbibition obvious है कि आप पढ़े ये imbibition that means the adsorption of the water content ठीक है हाँ ये भी किसी हद तक रोल ਜਿਹੜਾ अपना play करता for the transportation of water near up to the 100 to 1000 atmospheric pressure is basically generate in case of the imbibition process ठीक है so ये भी ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਵੀ pressure ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਨਾ capable ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ कह लो कि वाटर की ट्रांसपोर्टेशन लिए बिकॉज क्योंकि इस दे विच जिहड़ी वाटर की मूवमेंट है थ्रू बाय मीनस ऑफ द हाइड्रोफिलिक कोलाइड जिहड़ा हाइड्रोफिलिक कोलाइडल सोल्यूशन ऑब्वियस है बनता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इम्बाइबेशन दैट इज़ वेरी स्लो वन ठीक है ना सो वाटर मूवमेंट जी प्रोसैस के थ्रू बहुत स्लो होंगी है ठीक है एंड स्लो होने के नाल एंड दे कैन होल्ड द वाटर वेरी फर्मली ठीक है कि वाटर ਨੂੰ बहुत ही अच्छे तरीके ਨਾਲ पकड़ के रखते हैं ऑब्वियस है कि जे ਉਹਨੂੰ पकड़ के रखेंगे तो ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ मूवमेंट है वो कह लो कि थोड़ी बहुत औखी हो जाएगी उसकी जी ट्रांसपोर्टेशन है थोड़ी मुश्किल होएगी हाँ लूज होवे फ्लैक्सीबल होवे दैट्स अ डिफरेंट थिंग ठीक है सो दैट मीन्स दे आर द मेजर ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग द इम्बाइबेशन थ्योरी नेक्स्ट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी so obvious है कि जो atmospheric pressure है when water is to be lost by the transpiration the pressure at the transpiring surfaces
falls below that of the atmosphere, ठीक है। सो ਜਿਹੜਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਸਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਟਰ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਾਟਰ ਦੀ ਜੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੀ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਵਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਐਟ ਦ ਲੋਅਰ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਨੈਸੈਸਰੀ ਫॉर द ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕਿ ਲੋਅਰ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫ੍ਰੀ ਰੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਵਾਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਰੀਚ ਕਰਨਾ ਪਾਣੀ ਨੇ ਵੀ, ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੀ negligible one, ठीक है ना। so that means they are the major objections, we can say is that they are major objections regarding these kind of theories which make the transportation of water in a little bit amount हाँ करदियाँ ने but थोड़ी बहुत amount ਦੇ ਵਿੱਚ। so main ਜਿਹੜੀ widely accepted theory है that is the cohesion tension theory, which will we talk a later one, ठीक है। सो कोहेशन टेंशन थ्योरी ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड है बिकॉज इट डील्स विद द डिफरेंट क्राइटेरियाज रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ठीक। सो दिस इज़ इट रिगार्डिंग योर वाइटल फोर्स थ्योरीज और एज वेल एज द फिजिकल फोर्स थ्योरीज।